We at the Inventor Challenge, a Colors Infinity original, set out to find the best minds in India. मेरी invention है safety band. इसका नेम मैंने लेग माउस रखा है। The easy seater. Before I tell you my invention, I would like to ask you a question. अगली बार मेरे लिए मिनिएचर ताजमहल और पेठे। इनके बुढ़ापे का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बुढ़ापा मैं हूँ लेकिन सियापा ये है। Madhuk, I'm really coming for that seat next season. पहला प्रोटोटाइप बनाते हैं सिंपल। You're thinking of design which is very furniture. Not happening. So you guys have your voting meters in your hand. Go ahead and just vote for your favorite invention for the day. Are you ready? I am. 3, 2, 1. The winner is. We at the Inventor Challenge, a Colors Infinity original, set out to find the best minds in India. After going through thousands of inventors from across the country, we will bring 4 inventors in every episode to Mumbai to present their ideas to our esteemed panel. मेरी invention है safety band. ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन है। The vegetable peeler. The easy seater. The rangoli dispenser. The panel will then decide which 2 are the best and send them to our labs so they can build them out. The finished products will then be judged by the everyday people to decide करेंगे उनमें से सबसे useful कौन सा है और उसे मिलेंगे 10 लाख रुपए। I'm Ahana Kumra, your host for this season, and this is the Inventor Challenge. आज हम देखेंगे ऐसे inventions को which aren't something you keep in your house or in your office or even your pockets. Today we'll be looking at wearables, something that is literally an extension of our bodies, making these devices even more convenient to use. But before we get to these inventions, let me introduce you to the panel. My name is Dhruv Madhok and I'm the co-founder of Arata. In 3.5 years, we were able to take our idea from our kitchen to millions of homes across the country, and in the process have made a 100 crore company. Let's see which invention can find a place in people's everyday lives. My name is Malini Agarwal, but you might know me as Miss Malini. Miss Malini's content is consumed by over 40 million people a month from across the globe. I'm here to see if your story is good enough. Hi, I'm Sarovar Zaidi. I've been in the field of social anthropology, architecture and design for 10 years. I've been on countless juries, mentored students and run studios. I'm here to see if you took the right approach. I'm Dhruv Bhasin, co-founder at Arata. With over 50 all-natural products ranging from hair gels to anything you would need for your body, I'm constantly on the lookout for how to make people's lives better. I know how long the road to inventing a successful product is. I want to see how dedicated you are. You think we should call them? Let's call them in. Let's call them in. Do it. First up is 18-year-old Akshay, who's come up with a shoe that can save our lives. What? I really have to see this. Hi, Akshay. Hello. Hi. Welcome. आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। Thank you. तो अभी आज तक आपको सबसे अच्छा दुनिया में इन्वेंशन क्या लगता है? मेरे हिसाब से ट्रांजिस्टर्स और बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल का कोई भी इक्विपमेंट आप ले लो, उसकी चिप्स भी ट्रांजिस्टर से बनती है और बैटरी तो पावर सोर्स, it's important. Got it. Thank you very much. So what's your power source? My mother, father and sister. Great answer. Fantastic. Thank you so much for this introduction. It's wonderful to get to know you a little bit better. It's your moment now. Tell us about your invention. We're super excited to hear. Okay. Before I tell you my invention, I would like to ask you a question. Okay. Oh my God. Do you know how many people died due to landmine last year? No, I didn't think of The that. number was 7,562, and it's only gonna increase day by day. Well, why did I ask you this? It's because my idea will try to bring this number down to 0. So it all started हमेशा की तरह एक एक्शन गेम से. Okay. मैं गेम खेल रहा था और मैं उस गेम में काफी अच्छा था, बट रिसेंटली जब गेम ने एक लैंडमाइन का फीचर अपडेट किया तो मैं हारने लगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे रूट के बीच में लैंडमाइंस प्लांट करके चले जाते थे. Okay. अब मैंने सोचा शायद गेम में उसका कोई ऐसा डिवाइस हो जो मुझे बता दे कि मैं उस लैंडमाइन पे ना जाऊं या दूसरा रूट ले लूं, बट गेम में ऐसा कुछ नहीं था. देन आई थॉट कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड में ही ऐसा कुछ नहीं है तो शायद रियलिटी में भी नहीं होगा. मुझे ये समझ आया कि क्यों ना एक ऐसा शूज बनाऊं
जिसके अंदर एक मेटल डिटेक्टर हो, वो दोनों इंटीग्रेटेड हो और साथ में काम करे। मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने शू मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, मैं मेटल डिटेक्टर की थियोरी क्या है, वर्किंग क्या है, सब समझा और सीखा। सो आई वांट यू टू इमेजिन विथ मी ओवर हियर। सो इमेजिन अ शू। द शू कवर इज मेड अप ऑफ लेदर एंड रबर which will give protection and comfort. The sole is made up of PVC and rubber which will provide flexibility and strength. Now take the sole and cut it into the half and you will see two coils. One coil is transmitting coil and one coil is receiving coil. Got it. The coils will be connected to a CPU or a circuit board. The circuit board will be having a knob. The knob is used for varying the sensitivity of the metal detector, and it will be all powered by a battery of 12 volt or 9 volt. It's an interesting idea that you've come up with, but you have put it on the person who is going to find the mine. And how are we going to navigate that? Tell me. It's better than the existing metal detectors, which are long, which are heavy. You have to carry with you. So it adds extra weight over you and they are not at all portable. My shoes would be very useful in this place because आप घर के बाहर metal detector भूल के जा सकते हो but shoes के बिना नहीं जा पाओगे. So my shoes will be also very portable क्योंकि उसे extra weight carry नहीं करना होगा और light weight होगा क्योंकि सब metal rods और वो सब का वजन उसे नहीं लेना है extra. He just need his shoes and circuit board. Also, I want to ask you something. When you were thinking of this idea, did you think about different ways of applying this? Now, drones have come in, right? Drone's a good point because that's like quite effective as well. If there's a minecaphone drone which can just hover and find the landmines. So yeah, your idea is right. There are minesweepers which are not human, but when you are on operations and urban missions, you have to carry only the things which you need. And will these shoes have the same durability that, you know, the typical soldiers would wear? Yeah, sure. As I already told you, they will be made of PVC and rubber. So rubber will provide a good grip. PVC will provide a strength. This is obviously a very serious issue. The process in which a landmine works is that the trigger gets activated when you step on it. Yes. Right? It won't explode at that point. When the weight comes off the trigger is when it explodes. Now, if it's installed in my shoe, right? If I were to be walking and I were to step on the landmine and I immediately get the alarm, would I have enough reaction time to stop in my tracks? Or would I be walking and by the time I hear the alarm, the foot would have already gone off the trigger? We can add a type of a lever. Now, the shoe's lever will be connected from here. When I step on the landmine, I can retract those levers. Two people will step on it, which will add their weight. I will detach the lever. I will move back, put a weight, something like substitute weight like a rock or something. And all the people will move back and pull back the lever. Right. So what stage does it give you the warning? It might create some problem while detecting landmines when you are running. Okay. But if you are walking slowly or you are just pace running, it can detect because electricity runs faster than our body movement. So even if your foot, आपका पैर इसके ऊपर नहीं है मगर पास में है तो detect करेगा. In this much. In that area. I think it's absolutely wonderful, and usually I believe that video games today are perpetrators of violence, and you're standing here as an exception. I wouldn't want to use that as something to encourage people to play violent games, but I'm glad that we're seeing such exceptions. Yeah, that your thought process went in that direction. It's really amazing. Ahana, why don't you come on out and please let's give you a round of applause for such an epic idea. Great work. Incredible. It was such a serious conversation. All I could think was that he's from Surat and he has to bring me that tomato save next time. Okay, man. Wow. Save tomato na shark. You have to bring me that next time. I'll add the shave puri with it. Is that also Yeah, famous? shave puri is very famous there. I don't shave, so that's fine. Even Ahana's in the mix But now. मैं तो पूरी तरह shave करता हूँ. So shave puri is works. But look, I'm really coming for that seat next season. You can't copy her Hold joke. on to that. Thank you so much. Awesome. Congratulations again. All the very Thank best. you. Shall we move on? Yes. Let's do it. Our next inventor proves that the world's future is in safe hands. Because our next inventor is 8-year-old Manishka.
who wants to make sure you never get lost. Manishka, how are you? Fine. आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आज? Happy. Happy, very happy. स्माइल तो नहीं कर रहे हो आप? आपके पास कोई ऐसा इन्वेंशन है जिससे हम आपके सारे टीथ देख सकते हैं? ये रहा, दिख गया। परफेक्ट। आप कहाँ से हो? आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मेरा नाम मनीषका दुबे है। मैं 8 इयर्स की हूँ और मैं 5th ग्रेड में हूँ। Manishka, as a kid, is very curious about a lot of things. मुझे सबसे ज्यादा पसंद स्विमिंग, बेकिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग और मेरा भाई पसंद है। The environment at home is very nice, like with my grandparents. So it's more of a full family. So where like it's not about that, it's just, they are just raised by me. Rather than me, they are more raised by my grandma and उन लोग के अपने नाना नानी से ज़्यादा। मैं रोज ही मनीषका को जब स्कूल पिक करने जाती थी, तो दिस वाज द डे व्हेन वो एकदम बाहर आके शी सेड मम्मा मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है और मुझे तो रोबोटिक्स करना है। तो आई थॉट कि मुझे एक बार इस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए और बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, बट उन्होंने बोला नहीं ये तो बच्चा है 5 साल का, अभी लेट हर बी 10 इयर्स। बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं तो आप तो कुछ भी मान जाओगे। तो आई जस्ट गॉट टू नो बाय समवन that there is like SP Robotics and I met Shivakshi ma'am. I asked her like if she can take Manishka as a student. Then seeing Manishka and her excitement to enter the lab, so she said ठीक है मैं ले लेती हूँ। अब्दुल कलाम के थॉट में if you fail never give up because fail means first attempt in learning. चलिए अमेजिंग मनीषका, अभी आप बताइए अपने इन्वेंशन के बारे में। मैं बचपन में एक बार खोई थी जब आई वॉज गोइंग कैलकाटा काली मंदिर विद माई नानू नानी और मेरे भाई के साथ। मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं थी क्योंकि शी वॉज वर्किंग। मेरे नानू का एक्सीडेंटली हाथ छूट गया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वहाँ पे मुझे याद आया कि मेरी मम्मा ने बोला था कि जब भी आप खो किसी स्ट्रेंजर के पास ना जाना, पुलिस हेल्पलाइन या फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना। मेरे पास एक आईडी रहती थी जिसमें मेरा नाम, मेरी मम्मा का नाम, मेरी फैमिली के नंबर्स रहते थे। तो मैंने वो आईडी दिखाई, उसमें उन्होंने मेरी मम्मा को कॉल किया और फिर मेरी मम्मा ने मेरे नानू नानी को कॉल किया कि आप पुलिस हेल्पलाइन में आ जाओ। तो मेरी इन्वेंशन है सेफ्टी बैंड। ये सेफ्टी बैंड क्या करेगा, जब बच्चे को लगेगा आसपास डेंजर है तो वो SOS बटन ट्रिगर करके बजर बजने लग जाएगा। QR कोड होगा जिसमें आप स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। और रात को अगर बच्चे को डर लगेगा तो LED ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगी। आप कितने साल की थी तब? 3.5। और आप 3 years पे खुद गए थे। That's amazing. और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, आपने ये जो लाइट का ऑप्शन डाला है। तो आपको अंधेरे में डर लगता है? मेरे भाई को और मुझको, बट मुझे ज्यादा डर नहीं लगता, मोस्टली मेरे भाई को लगता है। अच्छा, मतलब इनको कम डर लगता है, भाई को ज्यादा डर लगता है। और आपका जो बैंड है, क्या उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे QR कोड स्कैन करके उस चाइल्ड का घर का पता, फोन नंबर, ये सब, या क्या वो बैंड कोई सिग्नल देगा? मतलब थोड़ा बताएंगे। वो आर्डिनो जो मैं लगाऊंगी तो वो जब बजर बजेगा तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट हेल्पलाइन के पास होगा। ओके। और अगर कोई फोर्सफुली ग्रैब करेगा या उनको कहीं ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है इस वॉच में? तो अगर तो कोई बच्चे को अगर फोर्सफुली ले जाएगा तो आप वो SOS बटन को ऑन ट्रिगर करके बजर बजने लग जाएगा। और ये जो बैंड है ये सारे बच्चों के लिए है या कोई स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए है? सर नहीं, ये बड़े बच्चे और छोटे बच्चों के लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए। इसका मेन फर्क ऐप से क्या होगा अगर हम अपने स्मार्ट वॉच में एक ऐप रख लें या फोन में? अगर आप स्कूल में देखो तो स्कूल्स में आपको 8th स्टैंडर्ड के बाद ही रिस्ट वॉच पहनने को मिलता है। ओके।
तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग वॉच नहीं पहन सकते तो हम बैंड तो पहन सकते, तो मैंने ये आइडिया इन्वेंट किया। ओके, अगर मेरा चाइल्ड मिसिंग हो जाए तो मैं कितने रेडियस में मुझे होना चाहिए ताकि मुझे सिग्नल मिल जाए या अलर्ट मिल जाए कि चाइल्ड मिसिंग हो गया है, कहीं गुम गया है? आप पास भी रह सकते हैं या फिर दूर भी रह सकते हैं, लेकिन आपके जो ऐप में है आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा कहाँ है। ओके। मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने अपनी मम्मी की तरह सोचना शुरू करा इस एज पे, मतलब कि आपने उनके लिए सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो। ओके मनीषका, आप किसके साथ आए हैं आज यहाँ पर? मम्मा एंड माय ब्रदर। आपकी मम्मा को हम स्टेज पे बुलाएं? Let's have Manishka's mom on stage here, and I think we need to give this incredible lady a standing ovation. Welcome, ma'am. What is your name? My name is Shefali. Shefali, you are so incredible. I want to know a little bit about your story. I mean, you're a single mom, you're raising these 2 kids. Your daughter is super bright. Tell us a little bit about yourself. So like I stay with my parents in Dehradun and I'm a 3D animator and a concept artist. I'm feeling very proud and speechless. But I'm very thankful to all you judges to give a great platform so that, you know, the kids can express actually what they are making. We're hoping to find many more such Manishkas across the country, and we hope we continue to, you know, to keep the brightest minds encouraged. Thank you. And let's do another round of applause for you, Manishka. You are incredible. Hi. She is a child prodigy and you are a super mom. Absolutely. All right, come. We're going to send the next set of inventors. Bye. Good job, Manishka. Good job. Coming up next is Menuddin, a 17-year-old boy who wants computers to be more accessible. Hello. मेनुद्दीन, हेलो। और कहाँ से आ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश गोंडा। हाँ, गोंडा की क्या खासियत है? आम ज्यादातर। कौन सा आम मिलता है? दशहरी, लंगड़ा, सफेदा? दशहरी, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश इस पे बहुत टेंशन में रहता है कि कौन सा आम कहाँ से आ रहा है ना? प्लीज सरोवर के लिए आम लाओ को। I know, ये बड़ी आम बातें हो रही हैं। और आपका इन्वेंशन के बारे में बताइए थोड़ा। मैं एक दिन अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहा था, देन सडनली टेबल से माउस नीचे गिर गया। तो माउस को उठाने वाला था कि मेरा पैर गलती से माउस से टच हो गया। टच होने के बाद थोड़ा सा माउस मूव हुआ तो मैंने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी रिमूव हो रहा है। उसी टाइम मेरे माइंड में आइडिया है क्यों ना एक ऐसा माउस डेवलप किया जाए जो पैर से ऑपरेट हो। जैसे जिनके पास हाथ नहीं है या हैंडीकैप लोग हैं वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इसी आइडिया को माइंड में रखकर मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया। इसका नेम मैंने लेग माउस रखा है बिकॉज ये पैर से ऑपरेट होता है। इसका शेप मैंने सैंडल का दिया है जिससे पैर में इजीली फिट रहे। वाओ। इसका लेफ्ट क्लिक बटन पैर की टो से, राइट क्लिक बटन फिंगर से क्लिक होता है। मैंने स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया है, बट इसको हम एज अ नॉर्मल पीपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं तो माउस यूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी हेल्प से हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और साथ में किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना होगा तो इसकी यूज से कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर पीसीबी सर्किट का यूज किया है जिससे एलईडी लाइट, अल्ट्रासोनिक सेंसर और क्लिक्स बटन अटैच्ड हैं। माउस के नीचे एक लेंस लगा है जिससे कर्सर इजीली मूव होता है। इसको हम एज अ ब्लूटूथ या यूएसबी से ऑपरेट कर सकते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, थोड़ा सा मुझे जैसे डिस्क्राइब करिए कि ये दिखेगा कैसे, मटेरियल क्या है, फिजिकल फॉर्मेट इसकी कैसी है? इसके नीचे एक प्लास्टिक होगा स्लीपर की तरह, उसमें फिर अंदर इसके सर्किट अटैच होगा, फिर इसके आगे पैर की टो फिंगर की जगह पर क्लिक बटन यूज होंगे। जैसे माउस में काफी वो बॉल होता है ना, तो वो भी होगा उसके नीचे? नो मैम, सेंसर यूज होगा। इंफ्रारेड? यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो ये माउस सिर्फ एक साइड लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड के लिए बोथ सेट हो सकता है? यस मैम, सेट हो सकता है। अच्छा, तो मेनुद्दीन, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो अगर आप लैब स्टेज तक पहुंचेंगे, आप एग्जैक्टली क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे अपने इन्वेंशन के साथ? इसमें मॉडिफिकेशन करके उसको और इजी और जितना हो सके उसको और मॉडिफिकेशन करूंगा। आई बिलीव कि ये बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है जो स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। अब इसको हम एवरीडे लाइफ में इंकलकेट कैसे होगा? अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें वो जूता या स्लीपर अलग से कैरी करना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके से बिल्ट इन हो सकता है वो और आसान हो जाएगा। वो फ्रिक्शन बिटवीन
यूसेज एंड एवरीडे लाइफ नहीं आना चाहिए. But you don't carry your mouse around with you when you go out. But Because you'll keep this at home near your desktop or your laptop. But no, in the sense that, for example, if you're traveling out and you need to use a mouse or something like that, then So you would carry that along as an accessory. It would be like you carry a or mouse. if it's built in. But I think this is all to be decided and seen what happens in the lab phase. It can be really worked upon if it does proceed. But thank you, Menuddin. Thank you for coming. So much. All the very best. Thank you, sir. Now, this was an aha now moment. This is an But aha on a more na serious moment. note, I think he has come up with an amazing solution. So I think that's absolutely incredible. So wonderful. Well done. इन्होंने आपको बताया क्या है आगरा से हैं? आपने मुझे बोला था आप आगरा से हैं? लेकिन रहता आगरा हूँ. हाँ देखिए, रहते आगरा से हैं तो इनसे पेठे मंगवाइएगा. अच्छा. तो अगली बार मेरे लिए मिनिएचर ताजमहल और पेठे. देखिए मैं पीछे जाके यही बातें करती हूँ इनसे. चलिए, but this was great, Menuddin. Thank you so much. Thank you. Thank you. Our next inventor for today is Pratyush from Odisha, who wants to make sure that wherever you are, you're never far away from a seat. Let's see what he's come up with. Hello. So, what's your name? This is Pratyush Kumar Raut from Cuttack, Odisha. Currently, I'm in my old is only 15 years. Only 15 years? Yeah. Okay. And what do you do for fun when you're not inventing? I'm like to do singing song. Very good. And listening song also. So great, Pratyush. Welcome to the Inventor Challenge. We'd love to see अगर आपका idea lab stage में जाए और ये इसका prototype बने, लेकिन उससे पहले we'd love to learn about your invention. All the best. पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. मेरे घर में मेरे जो ग्रैंडपा हैं उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रहा है. ये सिर्फ मेरे ग्रैंडपा का नहीं, हर एक बुजुर्ग लोगों का ये मन होता है कि मैं आज गार्डन पे बैठूं, मैं आज छत में बैठूं, हर जगह पे बैठूं. तो मेरा जो ये इन्वेंशन है ये है द इजी सीटर. अच्छा. यानी कि जिसमें आप इजी से बैठ सकते हैं. ओके. इजी सीटर को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहले हमारे जो कमर से है कंधे तक, इस पार्ट में हम रखे हैं एक बेल्ट. जो बेल्ट बैठने के समय आपको हेल्प कर सकता है. और यहाँ पे एक सीट जिसपे आप बैठेंगे. और यहाँ पे एक बेल्ट जो आपका जो कंधे है उसको संभाल के रखेगा. वाव. उसके साथ आते हैं लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में हम 2 हुक्स लगा रखे हैं. ये किसके लिए है? आप चाहे जूते हो चाहे चप्पल हो, आप जो भी पहने रखे हैं ये उसमें इजी से फिट हो जाएगा. पट्टी में पूरी की पूरी ठीक से फिट होने के लिए यहाँ पे भी हम एक ऑप्शन रखें. थाइस में 2 बेल्ट है. अगर ये आपका बॉडी में है तो आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करके इजी से बैठ सकते हैं. Fantastic. So Pratyush, thank you for your idea. ये जो एक तरह का एक कॉन्ट्रैप्शन है, एक तरह का, है ना? इसके मतलब क्या मटेरियल्स यूज करेंगे, क्या इसका कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वो बता सकते हो आप डिटेल? यस मैम. पहले है बेकेलाइट प्लास्टिक, आप इसमें यूज कर सकते हैं. देन वुड का इस्तेमाल हो सकता है. देन स्टील का इस्तेमाल हो सकता है. ये भी वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है. अच्छा, आपको लगता है कि ये इन्वेंशन कभी भी फुली कंफर्टेबल हो सकता है, जैसे ऐसा लगे कि आप पहन ही नहीं रहे? हाँ, हो सकता है. ये चीज जो है ये वुड में ही सीमित रहता है, क्योंकि आप अगर वुड का इस्तेमाल करेंगे ये आपको ठीक से पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है. और इसको और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए जो सीट हमने दे रखे हैं यहाँ पे, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेदर का. तो ये हो सकता है. ऐसी कुछ मार्केट में अभी चीजें हैं, तो आपका ये इजी सीटर उनसे कैसे अलग है? मार्केट में इस तरह कौन सा चीज है, कैसे चीज है, वो तो मुझे ठीक से नहीं पता. पर मुझे इसमें जो स्पेशल चीज जो लग रहा है वो आप जब बैठेंगे आप बेंड नहीं होंगे. आपका बैकबोन जो है वो पूरा के पूरा स्ट्रेट रहेगा. Very nice. Pratyush, I think you're an amazing storyteller. And I love the way you speak. You're so animated. It really, you know how to build an engaged audience and you know how to sell. Yeah. And about the invention, the thought in itself is very, very nice. Iska biggest challenge, safety lag raha hai. And that's why I'm a bit confused as to whether this should proceed to the lab phase. So all the very best, Pratyush. Thank you so much for sharing. And we're very, very impressed with you. Thank you. Congratulations being so powerful. Congratulations. All the best. Yeah, thank you. I thought there were some more compliments being showered upon Pratyush. Ahana, you can take him and be Ravana. No, I will not. Okay. But that was great, and I think this is a very difficult deliberation for you guys. It is, absolutely. और एक बात सच्ची बताओ, इन 4 पैनलिस्ट में सबसे फेवरेट पैनलिस्ट कौन था तुम्हारा आज?
आज सभी जजेस तो हैं? नहीं, एक का नाम तो लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप ऐसे कहते हैं तो that's all and that, ma'am. अच्छा। Casually winning it The life. party- Sorry, the party's guys. over here, guys. Better luck next time. बुढ़ापे का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। हाँ, please रखना। फिर इनको मुझे एक तो चेयर कुर्सी फ्री दे आपको देना। चाहिए। बुढ़ापा तो ऑलरेडी पहुंच गया, प्लीज। बुढ़ापा मैं हूँ लेकिन सियापा ये है। ओके, आप अपनी गुफ्तगू चालू रखिए, हम इनको बैक स्टेज लेकर जाएंगे। Thank you, Pratyush. All the very best. Sounds good. Thanks so much. Thank you. I think it was what was really interesting of this people from Dehradun and Surat and Agra, and I know Ahana has a shopping list and food list, but it was really amazing to have people coming from so many different places who are thinking of invention and thinking creatively. And tough choices, but personal fave is the 8-year-old Manishka. I think it's just the perfect example of how if you set the right environment for someone who wants to learn, you can change the trajectory. And I really like the idea of the wearable seat. You know, imagine a product that you just, slip into and you almost forget that it's there because the weight is equally distributed, around your person. So this could be something but wonderful. I feel like that seat, I feel like you're just going to walk around like a robot. I think my biggest concern potentially with this invention is that we're adding weight. I actually liked this, the foot mouse idea also. I agree. It's very difficult to think, to create something which you don't yourself use and be able to adapt it to a very different tactile format. Right. I really think that the landmine detecting shoe potentially can have a lot of traction because this solves a huge problem for what I can see the use case mainly being for the armed forces. I don't see this being for civilians, but this is something that can save lives, save limbs. And if this can be hashed out at the lab stage, I think this could be a wonderful I invention. feel like they're all so deserving. चारों इन्वेंटर्स अपने आइडियाज पैनल को सुना चुके हैं, बट उनमें से सिर्फ 2 जाएंगे आगे हमारी लैब्स की तरफ और 2 जाएंगे वापस घर। आपको कैसा लग रहा है? Amazing. Awesome. Awesome. Great. Yeah, awesome. Nice. Everybody is feeling awesome. Panelists, are we feeling awesome? We are indeed. In the presence of greatness, how can you not feel awesome? So true. And it's the Inventor Challenge. And आज 2 inventors जाएंगे next lab phase में जहाँ पर आपका invention और explore किया जाएगा। 4 में से सिर्फ 2 जाएंगे लैब फेज में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 2 इन्वेंशंस अच्छे नहीं है. And don't stop and all the very best. And now, I'm going to announce the very first name. And I would like to congratulate You adding some suspense. somebody who likes to stand, but also somebody who likes to sit. Oh! Congratulations, Pratyush. All the very best. Congratulations, Pratyush. Congratulations. You're making it to the lab phase. Well done. Thank you, ma'am. All right. Okay, so the next one I have to announce, and I'm going to do it my way. Okay, are you ready? All right, let's do it. Okay, so you have to give me a soundtrack. Can you do Okay. it? Dun, 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 dun. Like musical chairs, and we'll see where I stop. Okay? Okay. Ready? Okay. And we have Congratulations. So you have to say with me to the moon. See, with the rocket, you're going to Mars. I'm going to Mars. Yes, you're going to Congratulations, Mars. Manishka. Congratulations. Thank you. I want to say something to Mainuddin and Akshay. I think it is fantastic that you both have tried to create new things. One inspired by playing video games, one by just an accident. And I think you should not stop inventing and thinking like this. And आपका future बहुत bright है. I personally believe both your inventions are absolutely amazing. Stick with it. Don't stop. Work even harder. And I'm sure there are hundreds and thousands of Akshays and Menuddins out there who are very, very inspired by what you've done so far. So congratulations on making it this far. Keep at it and all the very best. And Pratyush and Manishka, we will see you in the lab round. phase. Awesome. Congratulations and thank you so Congratulations. much for being here. Pratyush and Manishka have been selected to build their prototypes in our labs, Makers Asylum in Goa and MIT Institute of Design in Pune. Here, our inventors will get the opportunity to make their dreams a reality by taking their ideas from paper to prototypes.
They will have access to all kinds of machines, from a simple hammer to top-of-the-line 3D printer. And the most important tool, guidance from our mentors. Now that we know Let's who's go a chase part them. of... Let's go chase them quick. Let's get those handshakes. That was the maker community. Guys, they're going to be followed by the Bekar community. I'm Anupama, and I run a makerspace in a fab lab called Workbench Projects. I have been a very strong proponent for arts and tech, and I'm very invested in the space of education. I am in MIT now, and यहाँ पे लैब में हमको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है and फाइनल राउंड में लेके जाना है. Hello, Pratyush. Hello, ma'am. Welcome to MIT Institute of Design. Yeah, thanks. So why don't you take me through a bit of your prototyping exercise? Okay, so this is the leg part of this product. In this part, there is a hook and there is a seat. What material are we looking at? Wood. Okay. These are belts like the seat belt of the cars. The lower part of the seat made from ply. This is like you're thinking of design which is very furniture. Imagine your grandfather carrying it along with him as a wearable right at his back. He's unplugging it, taking it out, bringing it to the front, and he's bending down to put the hook. Not happening. Yeah. So there is a problem already there, which you need to solve. I will be working at Maker Asylum Lab, and my mentor is Wearables sir. Hi, I'm Wearables Chabra. I'm a mechanical engineer. I started Maker's Asylum about 10 years back with a thought to create a space for people like myself to come together and build things, try out new things, experiment, just for the fun of it. तो चलो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें? Yes, मैंने सोचा कि मैं एक सेफ्टी बैंड बनाऊं. इसमें मैं SOS बटन, LDR, LED, बैटरी, Arduino और GPS मॉड्यूल. इतना सब कुछ इसमें फिट आ जाएगा? मैं अभी डिजाइन कर रही हूँ. अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहला प्रोटोटाइप बनाते हैं सिंपल, उसके बाद देखेंगे क्या होगा. ओके. तो इसके अंदर ये GPS वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, क्योंकि GPS को ऑन करने के लिए बहुत सारी बैटरी लगती है और बार-बार उसको चार्ज करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा अगर हम सिंपल सा सिर्फ 2-3 चीजें हों. एक आपका Arduino, लो पावर ब्लूटूथ और कुछ LEDs लगा देते हैं, ठीक है. और एक QR कोड उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे. अगर आप 10 मीटर्स अपनी मम्मी से दूर हो गए, आपकी मम्मी को पता चल जाएगा उनके फोन पे कि बच्चा दूर हो गया. तो अब मुझे देखना शुरू कर देना चाहिए, राइट? या. इसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे, टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. So let's make this. इस इनोवेशन को बनाने में मेरा पहला जो प्रॉब्लम था कि जॉइंट्स पार्ट्स जो है, उस जॉइंट्स पार्ट्स को आपस में कैसे हम ठीक से कनेक्ट करें. हमको किस टाइप का डिजाइन डालना है, हिंजेस किस टाइप का डालना है, तो वो इजी से फोल्ड हो सके, एक आदमी ठीक से बैठ सके, कहीं गिर ना जाए. मैं बस छोटा सा कार्डबोर्ड का प्रोटोटाइप ही बनाया हूँ और मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 1 और 2% ही शुरू हुआ है. I tried to simplify my band features, but there was a challenge that what material should I use for my band. मेरे R&D फेज में बहुत सारे मटेरियल्स देखे, जैसे कि कार्डबोर्ड, मेटल, सिलिकॉन, और उनसे प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की. लेकिन मुझे उन सब मटेरियल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. कंपोनेंट्स विजिबल हो रहे थे जिनको विजिबल नहीं होना था. मुझे देखना था कि जो कंपोनेंट्स है वो किसी को चुभे नहीं और कंफर्टेबल हो. He began by first picking up this blocks of wood, trimming it to a certain dimension, and he used CNC machines to get the right cuts and precision thickness.
GPS modules with Arduino Nano के connection. He's been able to meet a lot of other inventors, get new ideas, which is quite nice for her to be able to grow in that space. Now with the time crunch, Pratyush is at a point that I'm going to make do with my capabilities and present something that I am capable of showing to the judges. मैं अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से ही इसको बनाया हूँ, तो वो पहला बंदा जो इसको टेस्ट करने वाला है वो मैं खुद हूँ। एक फोम मटेरियल मिला, मुझे लगा यही वो चीज़ है जिससे मैं अपना प्रोडक्ट बना सकती हूँ। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोटोटाइप करूँगी डेनिम के क्लॉथ से। इजी सीटर का कुछ जनरेशंस मैंने डेवलप कर रखा है, कुछ 5 जनरेशन से, पर अकॉर्डिंग टू टाइम मुझे सेकेंड जनरेशन को अभी बनवाना पड़ा। I like that Manishka simplified the product from adding all of those tech. From there to where it is now, it's simplified. I do like the idea of adding that QR code as well because that makes it easier for other people to contact parents. The form factor also seems quite decent. So those parts are quite exciting. कंज्यूमर टेस्ट में जो भी होने वाला है इसके लिए मुझे अभी से बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ कि लोगों के हाथ में वो मेरा रिस्ट बन जाएगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत सकती हूँ। Pratyush and Manishka are back in our studio in Mumbai with their working prototypes. Jahan these prototypes will be tested by a group of people we have specially curated to form our focus group. जो देखेंगे ये prototypes कितने आसान है यूज करने में, कितने relevant हैं उनकी लाइफ में, और किस invention को वो बनाना चाहेंगे अपनी जिंदगी का हिस्सा. The invention more people add to cart, वो जीतेगा 10 lakh rupees. I'm a physiotherapist. Yes, I do use technology as a wearable in my everyday life. I usually wear a smartwatch. I am a retired banker. I worked in Indian Overseas Bank for 33 years. I'm a clinical psychologist and a psychotherapist for the past 27 years. At present, I'm a homemaker. I would like something that I can wear and move around rather than carrying and move. But that also depends, like what is the product, you know? Mine is a nuclear family. So family में wife है, 2 बच्चे हैं, and I'm into business of interior design. Hi focus group. Hi. Welcome to the Inventor Challenge. आपके सामने 2 प्रोटोटाइप्स हैं. हमारे इन्वेंटर्स ने बहुत मेहनत की है. So the stage is all yours. Please tell our focus group what your prototypes are. So my innovation is the EG seater. That's help to sit everywhere and anywhere to a person. जो छोटा वाला प्लेट है, that is for our cuff. देन हमारे जो बड़ा वाला प्लेट है उसको थाइज में फिट करके, और देन उसके ऊपर वाला जो ब्लैक वाला बेल्ट है उसको कमर पे फिट करके आपको पहनना पड़ेगा. हेलो, मेरा प्रोडक्ट एक सेफ्टी बैंड है. ये 2 तरीके से काम होता है, एक ऑटोमेटिकली और मैनुअली. जब बच्चा दूर जाएगा पेरेंट्स से तो अलार्म बजने लग जाएगा, और मैनुअली अगर बच्चे को लगेगा कि वो डेंजर में है, वो एक ब्लैक बटन होगा और वो प्रेस करेगा और रात को एलईडी ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी. Two very interesting inventions in front of you, our focus group. So come and have a look at the inventions and take a call on which one works for you. I saw the seat thing and then I was really curious to know about it because nowadays I have a problem with my knees. As a physiotherapist, I can say that the wearable seat is a product that can be used if it makes a few changes, like the stability aspect. It needs to be self-efficient. We wouldn't want, 2-3 people helping you put it on and off constantly. पहनने के बाद मैं जब बैठने की कोशिश कर रहा था तो बैलेंस नहीं मिल पा रहा था.
तो शायद उसको प्रैक्टिकल यूज होना बहुत मुश्किल है उसका। So the wearable seat, okay, I found it a bit complicated to use it. It was not very easy. The screw came down. I was a bit disappointed when I saw that because I didn't find it trustworthy. It may make me fall down or something like that. The safety band, it was really thoughtful. One thing I would like to say about it, it was a bit bulky for the child to wear. The safety band is a good product, but somebody like me, I don't even know how to scan. So maybe they can include some feature for that to make it easily accessible to everybody. Yeah, child name, parent name, mobile number, home address, and email ID. Okay, now for the GPS tracker, I'm going to call somebody from our floor team because that person will put it on their wrist and then we'll go ahead and see what that does. Location. Connection loss. Today's generation, we need these kind of safety bands where you can have the tracking device. Good for everybody, not only for kids. बच्चों के लिए और elderly people के लिए अच्छा है वो कि एक रेंज में अगर आप रहेंगे तो आपके उनके ऊपर निगाह रख सकते हैं. So you guys have your voting meters in your hand. Go ahead and just vote for your favorite invention for the day. The focus group has given their judgment. So let's go and reunite with our panel to find out who wins the cash prize. Isn't it so exciting to be back again? And now we're finally going to see the prototypes. Yeah. So let's get them. Yes, let's get them in. Let's meet bring our them in. inventors. Thank you. Good job. All right. मनिष्का, प्रत्युष, आज आप बहुत cool लग रहे हैं. आपका fashion statement भी बड़ा अच्छा लग रहा है जो आप आए हैं इसके साथ. This is your invention? Wow. Yeah. Oh, wow. Nice. This You're is the wearing band. it. Yeah. Okay, so is it easy to walk with? Yeah. Okay, so can you walk towards me? Okay. Okay. Yeah, so now how does this chair work? This is the belt and these are velcros. ठीक है. And this. Perfect. Sit. And आप comfortable हो? Yeah, I'm comfortable. Okay. और इसका और एक फीचर है वो जो रबर. Right. Yeah, उससे जो slip नहीं होता. Slip नहीं होता. Got it. अच्छा मनिष्का, मैं आपका प्रोटोटाइप देखना चाहती हूँ. आप जरा सामने यहाँ पर आके दिखाइएगा. आप हमें दिखा सकते हो? Buttons दबा के. Oh wow. Very cool. So can we switch off the light? Yeah. Yeah. There we go. Wow. Very cool. So sound, light, and location and parents का information. और QR code ये scannable है अभी? Should we give it a shot? तुम्हें उसका लुक और फील अच्छा लग रहा है? हाँ? तुमने जो सोचा था तुम करना चाहती हो वो सब इसमें कर लिया तुमने ना? Very nice. Scan करें एक बार? Yeah. There we go. That's And super it cool. calls a number. Wow, that's super cool. That's amazing. That is super cool. Good job. Very, very cool. Well done, Manishka. Very nice, Manishka. Fantastic. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Good job. All right. Yeah. ये तो इन्वेंटर चैलेंज है और काफी सारे इन्वेंटर्स यहाँ पर आए हैं एंड ऑफ कोर्स देव बीन सो मेनी फेजेस टेस्टिंग फेज लैब फेज में ट्रायल्स भी हुए हैं बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द जूरी तो जूरी जरूरी है करेक्ट एंड देयर इज अ जूरी वोट और हम डिसाइड करेंगे इफ देयर इज समवन हु इज रियली रियली डिजर्विंग that has to go through so we keep that power with us. Manishka, Pratyush, I think you both should be very, very proud of yourselves, what you've achieved, how far you have come. At such a young age, you've come up with such amazing ideas. आपने इस मंच का पूरा इस्तेमाल करके एक fully working prototype बनाया है. You guys have both won in terms of what you have achieved by coming this far on the show. But it's incredible. आप दोनों को यहाँ पर देख के अपने inventions के prototypes के साथ बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है. I'm sure आपके families को भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको यहाँ पर देख के. So congratulations, an incredible job. Great work. चलो आहना आप भी बता दो who is your favorite panelist? Actually, I think इन लोग का सबसे favorite person इधर मैं हूँ. Because I'm the most non-judgmental person. I'm literally on your side, guys. Yeah, I agree. You're my favorite. Give me the envelope. Oh, like ta-dan, ta-dan, ta-dan.
गया. All right then. All right, ready. Okay, what's happening here? Are you guys ready? Are you ready? I am. Look at this. Oh. 3, 2, 1. The winner is Manishka. मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, but I was confident. Challenge अच्छा लगा. I'm very happy that यहाँ से I'm taking a different Manishka with me. Well, there you go. Congratulations. And I'm just very thankful for this new Manishka to me, more expressive. अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये 10 लाख रुपीस के साथ करोगे क्या? एक छोटा सा मिनी मेकर स्पेस खोलूंगी Nice. मेरे एज के बच्चों के लिए. Wow. That's amazing. Amazing. Right. Good job. But हमें लगता है कि आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मगर जो हम देखना चाहते हैं वो आपका 7th इटरेशन नहीं 11 वाला देखना चाहते हैं, जो एकदम परफेक्ट. Make sure that you follow your dream. Congratulations. Congratulations. Good job to both of you. And with that, we come to the end of another episode of this brand new Colors Infinity original. Pratyush and Manishka have proven that age is just a number when it comes to coming up with great ideas. अगली बार हम 4 और ऐसे ही mind-blowing inventors से मिलेंगे with ideas you'll need to see to believe and provide them the platform big ideas deserve. And we'll catch you next Saturday, same time at 8 p.m. on Colors Infinity and the Inventor Challenge YouTube channel. Till then, keep inventing. These 4 inventors have come up with ingenious ideas to add value to our lives when we're on the go. इंडिया में हर घंटे 6 बाइकर्स अपनी जान गंवाते हैं. 60% of millennials have or are willing to travel solo. But with solo travel comes a few challenges. It's an interesting idea. One of the main issues that I keep feeling is who do I leave my bag? अगर थोड़ा एक shake करना है, थोड़ा हिलना है. If you want me to jump around in front of you to make you relax. Good, Dhruv. I want to know, जब आप lab में जाएंगे, what is that one quality about you that's going to see you to the end of this competition? It appears a lot bulky, so I also see that as a visual barrier. You have a beautiful circular economy model going on. And the winner of the Inventor Challenge is